Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Govijana Vallabha Girivardhari Govijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Sunatira Vanachari Ramnatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajkacharya Sata Shri Srimad Jidanda Goswami Shlesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajkacharya Sata Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai, Jamun Mai Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrindi Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। और आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हिज ग्रेस पंचरत्न प्रभु। प्रभु जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। प्रभु जी ने टोरंटो में कृष्ण भावनामृत में ज्वाइन किया, उसके बाद वो न्यूयॉर्क में सेवा के लिए गए और 1976 में वो श्री मायापुर धाम में उन्होंने निवास किया और उसके बाद वहाँ पे विभिन्न सेवाओं में, मायापुर मंदिर की कंस्ट्रक्शन में, बंगाली बीबीटी की स्थापना में, और अभी वर्तमान में प्रभु जी ISKCON ऑनलाइन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। अगर अपने वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं chantnow.com। और प्रभु जी आप जानते हैं जो मायापुर धाम जाते हैं परिक्रमा के लिए, हर बार परिक्रमा में जितने भी ड्रामास होते हैं प्रभु जी कोऑर्डिनेट करते हैं और न्यूयॉर्क अन्य अन्य शहरों में प्रभु जी जाते हैं प्रचार के लिए। आज बहुत टाइम बाद यहाँ पंजाबी बाग में आए हैं। आइए हम तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, thank you. मेरा हिंदी बहुत कम, अनुवाद करेंगे? तो ये कह रहे हैं मैं हिंदी बहुत कम जानता हूँ। So, what to do? How many of you speak English? A good number. Okay. But still, we'll have translation. And there's devotees online. Oh boy, I'm on camera. Is that it? Haribo! Hare Krishna. It's nice to be here and speak in this temple. I don't think I've ever spoken here before. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं यहाँ इस मंदिर में उपस्थित हूँ और यहाँ पे मुझे ये अवसर मिला है यहाँ कक्षा देने के लिए। मुझे लगता है मैंने इससे पहले यहाँ कभी कक्षा नहीं दी। But I spent some time in the first Punjabi Bagh temple. परंतु मैंने कुछ समय बिताया है पंजाबी बाग मंदिर में। But once you came to give temple. Well, I don't think any of you even, none of you were there. This was 1980.
something, 80, 85, something like that, 80. 1985 में मैं यहाँ पंजाबी बाग मंदिर में आया था, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई शायद उस समय यहाँ उपस्थित था। The first temple was, I don't know where exactly, but anyway, it was donated by one gentleman, and I was there when my godbrother Sarabi Maharaj, he had taken that place and to serve Vrindavan and Mayapur. तो मेरे जो गुरु भाई हैं सुरभि महाराज, उन्होंने उनको जगह प्राप्त हुई थी, एक सज्जन व्यक्ति ने ये दान में दिया था वो जगह, पुराने जगह जहाँ मंदिर था, और वृंदावन और मायापुर में वो सेवा करते थे सुरभि महाराज, तो यहीं पे उनका ऑफिस था। And then Sambadas Prabhu came there. और उसके बाद सांबा दास प्रभु आए यहाँ पर, and I believe he became the first like temple president. और मेरा मानना है शायद वो यहाँ के फिर पहले मंदिर के अध्यक्ष बने। And that's the last. From there it's here. Now we're here. और वहाँ से फिर यहाँ पर आए। Was there something in between? Yeah. Once, couple of years back, you came to give class. Did I give a class? Yeah. Okay. Once you gave. Yes. Yes. That's where it was. So that was a long time. Hare Krishna. Delhi has changed so much. दिल्ली इतना बदल गया है. So much. India has changed. भारत बदल गया है. The world has changed. विश्व बदल गया है. Have we changed? क्या हम बदले हैं? That's the question. ये प्रश्न है. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from the 10th canto, and it's chapter 26, the verses 11 through 13. आज हम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद के अध्याय 26 श्लोक संख्या 11 से 13 पर पाठ कर रहे हैं. So because my eyes are not so good, I'm going to pull it up here on the where I can make it bigger. Okay, 10. क्योंकि मेरी आंखों की दृष्टि इतनी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अपने मोबाइल से पढ़ूंगा जहां पर मैं उसको बड़ा करके पढ़ सकता हूं. This chapter is entitled Wonderful Krishna. इस अध्याय का शीर्षक है अद्भुत कृष्ण. Adbhut. Adbhut Krishna. Adbhut Krishna. Adbhut. So, since the first two, there's two verses without purports, and then there's the verse which I believe may be here, anyway, on which we'll chant together. But first, I'll chant this one. श्लोक संख्या 11 और 12 में तात्पर्य नहीं है, तो इसे सिर्फ मैं पढ़ूंगा और उसका बाद हम मिलकर 13वां दोहराएंगे. Pralambam gata ghatayit vogram balena bhalashalina amochayad vrajapashun gopam charanya vanitaha. After arranging for the mighty Lord Balaram to kill the terrible demon Pralamba, Krishna saved Vraja's cowherd boys and their animals from a forest fire.
भीषण दैत्य प्रलंबासुर को बलशाली भगवान बलराम द्वारा मरवाकर कृष्ण ने ब्रज के ग्वाल बालों तथा उनके पशुओं को दावानल जंगल की आग से बचाया। आसीविश्याता mahindram namitva vimadam radat prasadyodrasya yamunam chakresa nirvishodakam. Krishna chastised the most poisonous serpent, Kaliya, and after humbling him, he drove him forcibly from the lake of the Jamuna. In this way, the Lord made the water of that river free of the snake's powerful poison. कृष्ण ने अति विषैले नाग कालिया को दंड दिया और उसे विनीत बनाकर यमुना के सरोवर से बलपूर्वक निकाल बाहर किया। इस तरह भगवान ने उस नदी के जल को सांप के प्रचंड विष से मुक्त बनाया। Okay, so now we'll be doing this next verse 13. तो हम अगले श्लोक का पाठ करेंगे। By the way, one thing that you should do, you have to make a better arrangement for Bhagavatam. Please. You've got this fancy seat. And anyway, there's actually a GBC law that the stand for the Bhagavatam should be more opulent than the seat for the speaker. Okay? तो प्रभु जी कह रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ भागवतम के लिए और अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ये जीबीसी लॉ है, जो भागवतम का स्टैंड है वो व्यासासन की ऊंचाई से ऊपर होना चाहिए। Okay. Sorry. Dustyajaschana ragosmin. Is that it? Hold on. Got the right one? Yes. Okay. Sarvesham no vrjaukasam. Nandate tanaye smasu. Tasyapyautpattika katam. Hold on here. Dusyajas chanuragosmin. Sarvesham no. Sarvesham no vrtokasam. Nandate tanaye smasu. Tasyapyautpattika katam. Dustyajas chanuragosmin. Sarvesham no vrjaukasam. Nanda te tanaye smasu. Tasyapyautpattika katam. Others? Ladies?
Dustyaja. Impossible to give up. त्याग पाना असंभव. Cha and तथा anuragaha, loving affection. प्रेम. Asmin, अस्मिन्, for him. उनके लिए. Sarvesham, सर्वेषां, on the part of all. सब. Naha, नः, us. हम. Vraja Okasam, रजा ओकसाम, the residents of Vraja. ब्रजवासियों का. Nanda, नंदा, dear Nanda Maharaj. प्रिय नंद महाराज. Te, ते, your. तुम्हारे. Tanaye, दानये, for the son. पुत्र के लिए. Asmasu, अस्मासु, toward us. हम सबों के प्रति. Tasya, तस्य, on his part. उसका. Api, अपि, also. भी. Atmatikaha, औत्पत्तिकः, natural. स्वाभाविक. Katham, कथम, how. किस तरह से. Dear Nanda, how is it that we and all the other residents of Vraja cannot give up our constant affection for your son? And how is it that he is so spontaneously attracted to us? हे नंद महाराज, हम तथा व्रज के सारे वासी क्यों कर आपके पुत्र के प्रति अपना निरंतर स्नेह त्याग नहीं पा रहे हैं, और वे हम लोगों के प्रति स्वतः इतना आकृष्ट क्यों कर है. Purport by the disciples of Srila Prabhupada. The very word Krishna means the all-attractive one. The residents of Vrindavan could not give up their constant love, anuraga, for Lord Krishna. And do it sentence by sentence, or I read the whole purport and then you read. Okay. Their attitude toward him was not particularly theistic because they were unsure whether he was God or not. But he attracted all their love precisely because, as God, he is the all-attractive person, the supreme object of our love. The cowherd men also asked, how is it that young Krishna feels such constant love for us? In fact, the Supreme Lord loves all living beings who are eternally his children. At the end of the Bhagavad Gita, Lord Krishna dramatically declares his affection for Arjuna and urges Arjuna to reciprocate that love by surrendering to him. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his prayers to Lord Krishna, states, Itadashi tava kripa bhagavan mamapi durdhaivam idrishami hajni nanuraga. My Lord, you are so merciful toward me, but I am so unfortunate that love for you has not awakened within me. Shikshashtaka 2. In this statement, Sri Chaitanya Mahaprabhu also uses the word anuraga. Our misfortune is that we cannot reciprocate the anuraga or loving affection that the Lord feels for us. Although we are infinitesimal and insignificant, and the Lord is infinitely attractive, somehow we do not give him our love. We must accept responsibility for this foolish decision, since to surrender to God or not
is the essential expression of our free will. The Krishna consciousness movement provides an efficient, systematic program to help conditioned souls revive their original blissful consciousness, which is love of God. Jai Krishna Balaram, Jai Jai Shri Radha, Jai Jagannath Subhadra Baladev. Krishna consciousness. The intricacies of Krishna consciousness are so wonderful that even Krishna's eternal associates, the residents of Vrindavan, are astonished by them, as shown by these verses. कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। वृंदावन वासी भगवान कृष्ण के प्रति अपना अनुराग छोड़ नहीं पाए। उनके प्रति निवासियों की प्रवृत्ति विशेष रूप से आस्तिक न थी, क्योंकि उन्हें विश्वास न था कि वे ईश्वर हैं अथवा नहीं, किंतु वे सबों के प्रेम को आकृष्ट करते रहे, क्योंकि ईश्वर होने के नाते वे सर्वाकर्षक हैं, हमारे प्रेम के परम केंद्र। ग्वालों ने यह भी पूछा, बालक कृष्ण क्यों कर हम सबों से अनुराग रखता है? वस्तुतः भगवान सारे जीवों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उनके नित्य संतानें हैं। भगवत गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपने स्नेह की घोषणा नाटकीय ढंग से करते हुए अर्जुन से आग्रह किया कि वे भी उनकी शरण में आकर प्रेम का प्रतिदान करें। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर इतने दयालु हैं, किंतु मैं इतना भागा हूं कि मेरे अंदर आपके प्रति प्रेम जगा ही नहीं। इसी स्तुति में चैतन्य महाप्रभु अनुराग शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि भगवान हमारे लिए जैसा अनुराग का अनुभव करते हैं उसका हम प्रतिदान नहीं कर पाते। यद्यपि हम सूक्ष्म तथा नगण्य हैं और भगवान अनंत आकर्षक हैं, किंतु किन्हीं कारणों से हम उन्हें अपना प्रेम नहीं दे पाते। हमें इस मूर्खता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शरण में जाना या ना जाना हमारी स्वच्छंदता की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन बद्ध जीवों को अपनी मूल आनंदमय चेतना को, जो कि भगवत प्रेम या कृष्ण भावनामृत है, जागृत करने का सक्षम क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। कृष्ण भावनामृत की जटिलताएं इतनी अद्भुत हैं कि कृष्ण के नित्य संगी वृंदावन वासी तक उनसे चकित हो जाते हैं, जैसा कि इन श्लोकों में दर्शाया गया है। ओम आज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं वन्दे कृपतमं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दं एतनीश्वर। हरे कृष्ण, अद्भुत कृष्ण, अद्भुत wonderful Krishna. I think that doesn't need to be translated. So, but this I need to know what the word would be in Hindi for simply wonderful. तो प्रभु जी कह रहे हैं इसका क्या अर्थ होगा हिंदी में, अनुवाद क्या होगा? सिंपली वंडरफुल। You know what is simply wonderful? आपको पता है क्या होता है सिंपली वंडरफुल? Have you tasted simply wonderful? क्या आपने चखा है सिंपली वंडरफुल? Yes. So, in the very early days of ISKCON, ISKCON के शुरुआती दिनों में Srila Prabhupada, actually it's I'm not quite sure. He didn't have the ingredients to make, although he did sometimes make gulab jamuns, but not so easy to make gulab jamuns. तो शुरुआत में अक्सर सारे पदार्थ नहीं होते थे गुलाब जामुन बनाने के लिए। कई बार प्रभुपाद गुलाब जामुन बनाते थे, बट कई बार उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें सामग्री नहीं प्राप्त होती थी। In 26 Second Avenue, he would prepare gulab jamuns and feed the devotees. 26 सेकेंड एवेन्यू में प्रभुपाद गुलाब जामुन बनाते थे और भक्तों को परोसते थे। And they were really wonderful. और वो वास्तव में बहुत अद्भुत होते थे। Then he
prepared with milk powder and confectioner's sugar and some butter and little white balls. उसके बाद उन्होंने मिल्क पाउडर, चीनी और बटर, मक्खन से कुछ छोटी छोटी गेंदें बनाई. And he called these simply wonderful. और उनका नाम दिया simply wonderful. So one day, one devotee in 1971 asks, in Los Angeles, what happens to a person if we just give him out on the street one simply wonderful? 1971 में एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया, क्या होता है अगर बाहर गलियों में एक व्यक्ति को ये जो सिंपली वंडरफुल बनाया है ये हम देते हैं, Or some prasadam. या कुछ प्रसाद देते हैं. Actually, we can play this. Let's see if I can do this. Hold on. That is wonderful. Can you hear it? No. Simply wonderful. Where is it? Okay, hold He on. has not tasted such wonderful sweet in his life. Therefore you give him wonderful, and because he is eating that wonderful sweet, one day he will come to your temple and become wonderful. Therefore it is simply wonderful. So go on distributing this simply wonderful. Your philosophy is simply wonderful. Your prasadam is simply wonderful. You are simply wonderful. And your Krishna is simply wonderful. The whole process of simply wonderful. And he acts wonderfully. And it is acting wonderfully. Who can deny it? Prabhupada is simply wonderful. That's all right. You can become everyone. All right, have kirtan. Simply wonderful. Your Krishna is simply wonderful. श्रील प्रभुपाद उनको उत्तर दे रहे हैं, अगर आप ये अद्भुत मिठाई उस व्यक्ति को देंगे तो वो आपके अद्भुत मंदिर में आएगा और वो खुद बहुत अद्भुत व्यक्ति बन जाएगा. और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपका जो दर्शन है ये बहुत अद्भुत है, मंदिर बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, क्योंकि आपके कृष्ण बहुत अद्भुत हैं. ये पूरा का पूरा मार्ग और विधि बहुत अद्भुत है. तो शिष्य कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद क्योंकि आप बहुत अद्भुत हैं. So our Krishna is simply wonderful. हमारे कृष्ण मात्र अद्भुत है. But we are not attracted. What's going on? परंतु ऐसे अद्भुत कृष्ण से हम आकर्षित नहीं हैं. क्या चल रहा है? The residents of Vrindavan, they are attracted to Krishna. वृंदावन निवासी वो कृष्ण से आकर्षित थे. They are so attracted to Krishna that just before this chapter, because this chapter takes place after the lifting of Govardhan Hill. और वो कृष्ण से इतने आकर्षित थे कि इस अध्याय में, ये जो अध्याय है गोवर्धन लीला के तुरंत बाद है, While Krishna is standing there, holding the hill, all of the Vrajvasis are assembled underneath, and they simply drink the nectar of seeing Krishna, being there with Krishna. They lose all other thoughts of eating and sleeping, anything. They just are attracted to Krishna. जब कृष्ण गोवर्धन धारण किए हुए वहां पर खड़े थे तो सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे एकत्रित थे और कृष्ण दर्शन का जो अमृत है उसका रसापान कर रहे थे. और उस रस से वो बाकी सारे विचारों को भूल गए. ना उनको सोने का विचार आया, किसी को भूख लगी. Like iron to a magnet. जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होता है. Have you seen? You must have. आपने देखा है?
आपने निश्चित रूप से देखा होगा. In your school, did you do experiments with little iron filings, right? And a magnet? अपने स्कूल में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे. And you put the magnet in all those little pieces of iron that you... लोहे के अलग अलग चूरा या टुकड़े आप अलग रखते हैं और जैसे ही बीच में चुंबक रखते हैं तो तुरंत वो चुंबक से आकर्षित हो जाता है. And if the magnet is strong enough, that iron, maybe a piece of iron gets stuck and you cannot even take it away. और अगर चुंबक बहुत so strong. शक्तिशाली है तो लोहा इतने जबरदस्त तरीके से उससे आकर्षित चिपक जाता है कि आप उसको अलग नहीं कर पाते. So Krishna is like that magnet. कृष्ण उस चुंबक के समान है. And the jiva, the pure jiva, is like the iron. और जीव, शुद्ध जीव जो है वो लोहे के समान है. Automatically, unstoppably attracted to Krishna. स्वतः अप्रतिहत रूप से वो कृष्ण से आकर्षित होते हैं. But if that iron becomes rusty, becomes covered with dirt and rock or stone, the attraction is not there. परंतु अगर लोहे पे जंग लग जाए या उसमें अलग अलग प्रकार के मिश्रण आ जाए, कलमश आ जाए, तो लोहा आकर्षित नहीं होता. It is our actual, original, constitutional dharma to be attracted to Krishna. ये हमारी स्वाभाविक मूलतः स्थिति है, कृष्ण से आकर्षित होना धर्म है. That is our actual nature. वो हमारा वास्तविक प्रकृति है. But we don't feel it. परंतु हमें महसूस नहीं होता. Instead, we feel another attraction. और उल्टा हमें कोई विभिन्न प्रकार का आकर्षक अनुभव होता है. Maybe for you it is gulab jamuns. हो सकता है आपके लिए गुलाब जामुन हो. I was in the Govardhan, the Holy Name retreat. मैं भी होली नेम रिट्रीट में था जो गोवर्धन में थे. And we went to Ter Kadamba. और वहां पर हम टेर कदम गए. This is time for what we call true confessions. और ये जो समय है ये है जो वास्तविक इस चीज को स्वीकार करना. So we went to chant 64 rounds of Mahamantra. और वहां पर 64 माला का जप करने के लिए गए. And I had finished 32 by noon or something like that. और दोपहर तक मेरी 32 माला हुई थी. And in between, Sachinandan Maharaj or Burijan would speak about something about the holy name. और बीच बीच में सचिनंदन महाराज और भूरिजन प्रभु हरिनाम के बारे में कुछ कुछ बताते थे. And Sachinandan Maharaj told a story. और सचिनंदन महाराज ने एक कहानी बताई. Perhaps you've heard this story. शायद आपने सुनी है. About one devotee, you could say, sadhu. एक भक्त के बारे में आप कह सकते हैं एक साधु. Who would go in the forest at night and simply chant and meditate on Krishna all night long. वो रात्रि में जंगल में जाते थे और कृष्ण पर ध्यान लगाते थे, उनके नामों का जप करते थे पूरी रात. So he's doing this and he's sitting there and all of a sudden some attractive lady just runs past him, hits him, practically knocks him over and disappears into the forest. तो अचानक से कोई आकर्षित स्त्री भागती हुई जा रही थी, उनसे टकराई और उनको धक्का दे के बिल्कुल आगे वन के अंदर चली गई. And he said, nonsense lady.
Doesn't even और इस साधु say को sorry. बहुत क्रोध आया कि बदतमीज स्त्री, और चली गई और मेरे से क्षमा भी नहीं मांगी। It was some difficult. He continues his meditation, his japa. उसके बाद उसने अपना जप करना जारी रखा। फिर And morning time comes, सुबह का समय आया and he hears again the same sound और सुबह उसको वही ध्वनि सुनाई दी, of someone coming. कोई आ रहा है, And he sees it's the same lady. और देखा वही महिला है। But this time, the lady stops when she sees him. और इस बार वो महिला रुक जाती है जब साधु को देखा, And she bows down, offers her pranams. को झुककर प्रणाम अर्पित करती है। Sadhu, sadhu. And the sadhu asks her, "What's last night? You also came, and you practically knocked me over, and now you're paying your obeisances." कह रहा पहले भी आए थे रात में और एक तरह से मेरे को बिल्कुल गिरा दिया आपने, और अभी आप यहाँ आकर मेरे को आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो। And then the lady says, "Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. तो उस महिला ने क्षमा मांगी, मेरे क्षमा कर दीजिए। Last night, I was rushing to meet my lover, who I've not seen for 1 whole year." रात्रि में मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, जिससे मैं 1 साल के बाद मिल रही थी। I'm so sorry. I didn't even notice you. और मैंने तो आपको देखा भी नहीं। So Sachinanda Maharaj gave us some purport. और सच्चिदानंद महाराज ने इस पे तात्पर्य दिया। This is the fullness of anurag. यह अनुराग की पूर्णता है। To be so attracted to Krishna. इतने आकर्षित हो जाना कृष्ण से, That we actually lose awareness of the external world. कि बाह्य संसार की जो चेतना है उसको बिल्कुल खत्म कर दें। This is samadhi. इसको समाधि कहते हैं। Full focus and absorption. Sachinanda Maharaj gave a class in a Holy Name retreat about the topic of chanting with absorption. पूर्ण रूप से केंद्रित होना, उनको निवेश करना। सच्चिदानंद महाराज ने इस रिट्रीट में कक्षा दी थी, इस एब्जॉर्प्शन के साथ जप करना। So I listened to this story and I reflected and I said, how far I am. तो इस कहानी को मैंने सुना और आत्मलोकन किया और मुझे लगा मैं अभी कितना दूर हूं। You know, we've been sitting there. This was before lunch, by the way. ये दोपहर के भोजन से पहले की बात है। And I was sitting there and I was thinking, how attracted am I to Krishna? और मैं ये मनन कर रहा था कि कृष्ण से मैं कितना आकर्षित हूं। Compared to, well, you may not relate to this so much, but compared to, for example, apple pie with ice cream. तुलना में एक एप्पल पाई आइसक्रीम, उसके आकर्षण की तुलना में मैं कृष्ण This से is कितना। an American thing especially. ये एक अमेरिकन डिश है विशेषकर। You've ever heard the term as American as apple pie? आपने ये वाक्य कभी सुना है, एक एप्पल पाई के जितना अमेरिकी? I don't know if you ever have really had apple pie. मुझे नहीं पता अगर apple आपको pie. वास्तविकता में आपने कभी एप्पल पाई का स्वादन किया है। So I was thinking and I was reflecting, okay, apple pie, if right now, this minute, I was offered a choice between a nice plate of fresh, hot apple pie with vanilla ice cream on top, or go on chanting your Hare Krishna mantra. अगर मेरे को इस समय चुनाव दिया जाए कि एक तरफ आपके पास है एक प्लेट में
गरम गरम एप्पल पाई, ऊपर से थोड़ा सा आइसक्रीम डला हुआ है, और दूसरी तरफ ऑप्शन है कि अपना हरे कृष्ण मंत्र जप को जारी रखना है. You've done, go on, more, 32 more rounds, go on, go on. 32 माला कर लिए, 32 और करो. It was tough. I'm not sure. At that particular moment, I was looking at myself inside and saying, where is your love? तो उस क्षण मैं अवलोकन कर रहा था और देख रहा था कि मेरा प्रेम कहाँ पर है. Etadashi tabekripa bhagavan mamapi durdaivam, durdaivam. Idrishami hajani nanuraga, nanuraga, not anuraga, but nanuraga. That is Daivam. what I was feeling. Durdaivam, dur, how far away, dur. दुर्दैव, मैं अभी कितना दूर हूँ, मेरा दुर्भाग्य है. From anurag. अनुराग से. I started feeling maybe a little hopeless. और मैं उम्मीदहीन महसूस करने लगा. I have been chanting this Maha Mantra for 50 years. 50 सालों से महामंत्र का जप कर रहा हूँ. And yet, here I am sitting there and thinking, apple pie or... Of course there was no apple pie, so I didn't have a choice. और वहाँ बैठा मैं स्मरण कर रहा हूँ एप्पल पाई का. हालांकि वहाँ एप्पल पाई नहीं है, फिर भी मेरे स्मरण में है. But still, the attraction, where was my attraction? तो मेरा आकर्षण कहाँ पे था? What was I attracted to, truly attracted to? मैं वास्तविकता में किस चीज से आकर्षित हूँ? Is there anywhere in me love? क्या कहीं प्रेम है? For Krishna. कृष्ण के लिए. I began to think there must be love in me for Krishna. मैंने सोचना प्रारंभ किया कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रेम होना चाहिए, आवश्यक है. It's deep, it's down, I'm far away from it, but it's there. It must be there. It has to be there. वो मेरे अंदर मौजूद है, अभी गहरा है. मैं उस अवस्था से दूर हूं, परंतु मेरे अंदर वो प्रेम है. Because that's who I actually originally am. क्योंकि मेरी वास्तविक मूलभूत प्राकृतिक अवस्था यही है. That's who you are. That's who you are. That's who we are. We are actually fundamentally lovers of Krishna. तो ये हमारी मूलभूत अवस्था है. ये मैं हूं और आप सब प्राकृतिक रूप से कृष्ण प्रेमी हैं. But Krishna Bahirmukha, Bhool, we've forgotten. How does the verse go? Krishna Bahirmukha Bhule Japatiya Dore. Huh? Anadir Bahirmukh Krishna Bhulega Ataiva Maya Tare Japatiya Dhare. Right? So Bhogavancha Kare, yes. I'm trying to is one of the verses I'm trying to but anyway, not doing so well. Bhogavancha Kare, wanting this bhoga. भोग की इच्छा से कृष्ण से विमुख हो गए. We turn from Krishna. कृष्ण से मुंह मोड़ लिया है. And what happens? Maya atayeva Maya dara japatiya dare. Maya entangles us, wraps us up, covers us. और फलस्वरूप क्या होता है? माया पकड़ लेती है. With the illusion that which we want, that which is attractive, that we will find in the material world.
Krishna is all attractive. Krishna is the actual all attractive being. जो कृष्ण है वास्तविक में वो सर्व आकर्षक हैं, परंतु माया के फलस्वरूप हमें लगता है आकर्षक चीजें इस संसार में उपस्थित हैं। When we turn from Krishna, we get his reflection, the Maya. जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो उनका प्रतिबिंब माया के रूप में हमें प्राप्त होता है। We get the perverted reflection of his world in this world. उनके जगत का प्रतिबिंब इस जगत में हमें प्राप्त होता है। And everything we are attracted to in this world is actually perfect in him. और जिन भी चीजों से हम इस संसार में आकर्षित होते हैं, इस प्रतिबिंब में, वास्तविकता में वो सब मूलभूत रूप से कृष्ण में उपस्थित हैं। But the relationship in our pure state is different. परंतु शुद्ध अवस्था में जो हमारा संबंध है वो अलग है। In this state, bhoga vanchaka, we want to enjoy the world independently of Krishna. वर्तमान अवस्था में भोग वांछा है, संसार भोगना चाहते हैं कृष्ण से स्वतंत्र होकर। With the false ego that I am the enjoyer. इस झूठे अहंकार के साथ कि मैं भोगता हूं। We have to get free. हमको इस भाव से मुक्त होना है। This purport by my god brothers ends with a declaration. ये जो तात्पर्य है जो मेरे गुरु भाइयों ने दिया, इस The Krishna घोषणा के साथ समाप्त होता है। The Krishna consciousness movement provides an efficient, systematic program to help conditioned souls revive their original blissful consciousness, which is love of God. कृष्ण भावनामृत आंदोलन बद्ध जीवों को अपनी मूल आनंदमय चेतना को, जो कि भगवत प्रेम या कृष्ण भावनामृत है, जागृत करने का सक्षम क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। So although yes, we are durdaivam, jishami hajani nanuraga, we have a program. तो हालांकि अभी की अवस्था में हम दुर्दैवम हैं, कृष्ण से अनुराग नहीं है, परंतु हमारे पास एक कार्यक्रम है। We have a path. हमारे पास एक रास्ता है। We have a way to revive our real identity. हमारे पास एक तरीका है जिससे हम अपनी प्राकृतिक अवस्था को पुनः जागृत कर सकते हैं। We revive our attraction for Krishna by being with Krishna. हमारा स्वाभाविक जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है उसको हम पुनः जागृत कर सकते हैं Now, कृष्ण के संग में। more true confessions. अब कुछ और confessions। In my householder life, now I'm sort of vanaprastha. अपने गृहस्थ जीवन में अभी मैं वानप्रस्थ में हूँ। Living in America, अमेरिका में रहते हुए I watched some movies. मैंने कई मूवीज देखी। True confession. Not recommended, okay? इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। Anyway, some of you are householders, perhaps you know that sometimes आप में से कई लोग you गृहस्थ just हैं, feel like you need to relax कई बार आपको with some nonsense. Anyway. But in this particular, there was a man who was describing his arranged marriage. तो इस पर्टिकुलर मूवी में एक सीन आता है जिसमें व्यक्ति जो उसकी शादी तय की गई है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। How many of you here are grihastas? आप में Raise से your hand. कितने यहाँ पर गृहस्थ हैं? Okay. हाथ खड़ा करें। Now, how many of you had arranged marriage?
और आप में से कितनों की अरेंज्ड मैरिज थी parents they brought कि together, जब आपका विवाह है माता पिता ने तय किया था. I also have arranged marriage. मेरा भी विवाह ऐसे हुआ था. Now we're 42 years. हमारी शादी को 42 साल हो गए हैं. So this man was describing how in the beginning it was, there wasn't a lot of love. तो ये जो व्यक्ति वर्णन कर रहा था कि शुरुआत में कैसे कोई प्रेम नहीं था. But at one point he got a bit sick. परंतु एक बार वो बीमार पड़ा. And his wife took care of him very nicely. और उसकी पत्नी ने उसका बहुत अच्छे रूप से ध्यान रखा. And he said that from that point he began to really appreciate his wife. तो उसने बताया कि उस समय के बाद वो अपने पत्नी का सराहना करने लगा. And then out of that appreciation, affection developed. उस सराहना से स्नेह विकसित हुआ. And then from that affection, there was love. और उस स्नेह से प्रेम. Love in a higher sense. प्रेम एक उच्च संदर्भ में. Of truly wanting to serve and give the best. जिसमें वास्तविकता में ये इच्छा है सेवा की और कुछ देने की. In truth, love is not a feeling. वास्तविकता में प्रेम एक मात्र Love is action. जो प्रेम है वो कार्य है. In love of Krishna, it's not the emotion that is, although emotion comes, it's the focus, the attention, the giving of your attention. जो कृष्ण प्रेम है मात्र एक भाव नहीं है. भाव है निश्चित रूप से, परंतु उसका अर्थ है आपका जो ध्यान है, जो विचार है, उसको देना कृष्ण को. And making the pleasure of the beloved the goal. और अपने प्रेमी का आनंद को लक्ष्य बनाना खुद का. So we are in that state. We have been brought together by the mercy of Guru and Krishna. We have now a connection. We have become married to Krishna. गुरु और कृष्ण की कृपा से अभी हमारा एक संबंध है कृष्ण से. एक प्रकार से जैसे विवाह कर दिया गया है. Actually, we were already married. We've always been, but we become aware. We become aware of it. हम सदैव कृष्ण से संबंधित रहते हैं, परंतु अभी एक थोड़ा सचेत है. ये चेतना आई है. We become aware of our connection, our relationship, sambandha with Krishna. कृष्ण के साथ हमारा जो संपर्क है, उनके साथ जो संबंध है, उसके बारे में थोड़ा सचेत हुए हैं. Now through our practices of service, और अभी हमारा जो अभ्यास है सेवा का, we begin to appreciate that Krishna is doing everything for us. Krishna is providing everything. और इस बात की हम धीरे धीरे प्रशंसा विकसित करते हैं कि कैसे कृष्ण हमें हर चीज प्रदान कर रहे हैं. You begin to actually experience some affection for Krishna. That Krishna, you're so kind. You're so wonderful. हम कृष्ण का जो स्नेह है हमारे प्रति, उसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण आप कितने कृपालु हैं, आप कितने अद्भुत हैं. As we hear about Krishna in Bhagavatam and we associate with Krishna in his holy names, हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से और उनके साथ संग करते हैं उनके पवित्र नामों के द्वारा. and we're assured that true love that we all want will grow in our hearts. और हम आश्वस्त हैं कि जो सत्य प्रेम की लालसा जो हमारे हृदय के अंदर है, जो उसका अनुभव है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा. इस विधि से It will grow. बढ़ेगा निश्चित रूप से.
just keep watering. पानी देना प्रारंभ रखें, creeper, the bhakti lata. जैसे एक बीज का सिंचन करते हैं जल देकर. With the chanting of the holy names, as attentive as you can give it. Give your attention. You may not have love for the holy name and you just can't stop yourself, but you've got something. You have attention. जितना ध्यान पूर्वक होकर आप जप कर सकें, उतना ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेना. हो सकता है अभी हमारे ऊपर बस वो कोई प्रेम ना हो, परंतु इसकी शुरुआत होती है अपना जो ध्यान है कम से कम वो भगवान को अर्पित करें. I don't have any, automatic attraction, anurag, when I chant Hare Krishna. अभी मेरा स्वतः आकर्षण नहीं है या अनुराग नहीं है जब मैं हरे कृष्णा का जप करता हूँ. But my practice and your practice, our practice is to listen. Attention, give our attention to the names of Krishna. परंतु हमारा अभ्यास है सुनना. जो हमारा ध्यान है वो कृष्ण के नामों को देना. That is an expression of love. ये प्रेम की अभिव्यक्ति है. And by acting in love, love manifests more. और प्रेम में कार्यरत होने से ये प्रेम धीरे धीरे अभिव्यक्त होता है. So I've gone over time, I'm sorry. तो मैंने समय से ज्यादा चला गया. But I thank you very much for hearing. I hope that when we sit here to speak on Bhagavatam, at least it is my desire that I may learn something. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए. जब हम श्रीमद् भागवतम यहाँ पर मैं बैठता हूँ श्रीमद् भागवतम के लिए, तो ये मेरी इच्छा रहती है कि मैं कुछ सीखूं. By the grace of Srila Prabhupada, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, by contemplating, by reflecting, by trying to understand things, मनन करके, विचार करके, आत्मलोकन करके, Krishna helps us, and कृष्ण हमारी sometimes सहायता करते we हैं. get something. So I've been और very कभी-कभार आपको कुछ मिलता है. thankful for your participation, and Hare Krishna. तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके ने जो इसमें भाग लिया भागवतम कक्षा में. बहुत बहुत धन्यवाद. So I'm sorry I went over time. I don't know if you want to give time for Yes, we questions. can have one question. Yeah? किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. If anyone has any questions. Or comments, reflections. Hare Krishna, Ramji. So wonderful explanation about the love, because you first explained about Prabhupada's wonderful lecture. Here the purport says that Brajavasis have the spontaneous love for Krishna. And Sukadev Goswami also described that the cowherd boys, those who are participated with the Krishna's pastimes, they have collected so much pious. Sakam Bijahu Prutapunya Punja. So what type of pious activities that develop the attraction for the Krishna spontaneously? आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस अद्भुत लेक्चर को बताया विशेषकर प्रेम के विषय में, और जैसे श्रील प्रभुपाद के शुरू में बहुत अद्भुत लेक्चर को प्ले किया. यहाँ पर जैसे वर्णन आता है कि ब्रजवासियों का स्वतः आकर्षण था कृष्ण के साथ, और सुखदेव गोस्वामी भी ये वर्णन करते हैं जो कृष्ण के सखागण थे, उनका कैसे कृष्ण से स्वाभाविक आकर्षण था, क्योंकि उन्होंने कई पुण्यों को किया है. तो किस प्रकार के पुण्य कार्यों का फल स्वरूप उनका ये कृष्ण से स्वाभाविक आकर्षण विकसित हुआ. You're referring to that, was it Punya, Krita Punya Punyam, right? Punjam, Krita Punya Punjam. When Brahma is wondering.
I've heard from one senior devotee that in this context, that punya is bhakti. मैंने एक वरिष्ठ वैष्णव से सुना है कि इस संदर्भ में पुण्य का अर्थ है भक्ति. That the punya being, of course, Brahma may be thinking in some way, but that the actual, what punya that is been done, that is bhakti yoga. तो हो सकता है ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे हो पुण्य के संदर्भ में, परंतु जो उन्होंने सखाओं ने पुण्य कार्य किए वो वास्तविक में भक्ति है. And I was also hearing from another devotee recently, and I found this somewhere, but I can't, in Prabhupada's purports, that punya itself, even what we consider to be, pious activity, is only pious when it's connected to Krishna. और मैं एक अन्य वैष्णव से भी सुन रहा था कि जो पुण्य कार्य है वो पुण्य इसलिए होते हैं क्योंकि वो भक्ति से संबंधित है. So in other words, when one does karma yoga, उदाहरण के लिए अगर कोई कर्म योग करता है, or does karma, that the result of karma is only possible if there is bhakti there. तो कर्म का जो फल है तभी संभव है जब वहां पर भक्ति है. Jai japtam mam prapadyante tam stathaiva bhajam yaham. That Krishna reciprocates with everyone according to their surrender. कृष्ण सबसे आदान प्रदान करते हैं उनकी शरणागति के स्तर के अनुसार. So when he sees someone doing pious activity with some appreciation for God, then he gives some pious results with karma. वो देखते हैं कि कोई पुण्य कार्यों को करने में लगा है कृष्ण की थोड़ी सराहना के साथ, तो कृष्ण उसके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं. उसने जो पुण्य कार्य किए हैं उनका फल देते हैं. But in the case of the cowherd boys, as I said, I heard this from a senior devotee, but I'd like to find if there's some support for it, that the punya, the meaning of punya in this connection is sadhana bhakti. जैसे मैंने बताया कि मैंने श्रवण किया है वरिष्ठ भक्तों से, मैं साथ ही साथ शास्त्रों में इसका रेफरेंस ढूंढना चाहूंगा. इस संदर्भ में पुण्य का अर्थ है साधना भक्ति. And we know that is well accepted, but that's, you make some worship of the Lord, you arrange a festival, if it's done or maybe even all the other stuff like planting trees, etc., etc. These are all when done with the idea of satisfying Krishna. Then जैसे कि ऐसे विभिन्न अलग अलग कार्य हैं कृष्ण की आराधना को आयोजित करना, उत्सव आयोजन करना या अन्य पुण्य कार्य भी, पेड़ लगाना, अगर इस भाव के साथ किए जाएं कि कृष्ण की संतुष्टता के लिए है. Do you have anyone else have some enlightenment on this? का कोई और विचार है इस प्रश्न पर? What do you think? Is that Prabhuji, there is just, I want to clarify this thing. In Bhagavad Gita, Lord says, Jesang tu antagatang papam jananam punya karmanam te dvanda moho nirmukta bhajante ma dridhavrata. With fixed determination, you just engage in my devotional service. And in Bhagavatam it is reference Srunotam Sugatam Krishna Punya Sravana Kirtanam. So I think there is two different part, this punya and this type of punya. Like in Nruga, he got Lord's lotus feet because he performed so many pious activities. He gave charities, means the cows to Brahmanas. But the Brahman Patnis, Jagya Patnis,
they also did some punya, because they are always listening about the Krishna, but they did not get opportunity, and they got also the association of Lord Krishna, but they are different. Nruga just achieved some love for Krishna, but Jagyapatnis, they associates with Krishna, and then after that the Jagyapatnis and those who are Patman Kanta and Brata, they participated with the Ras Leela. It is true. Thank you. Thank you very much. जब भागवत गीता में बताया गया ये शंत अगंत भागवतम, जो वहाँ पे पुण्य शब्द आता है, और जब भागवतम में पुण्य श्रवण कीर्तना, तो यहाँ पे जो पुण्य है इसमें थोड़ा सा अंतर है. जैसे नृगा ने इतने सारे पुण्य कार्य किए, परंतु उसका जो फल है, अगर उसकी तुलना की जाए ब्राह्मण पत्नियों ने जो अलग अलग पुण्य किए, उन्होंने कृष्ण के बारे में श्रवण किया, ये भी पुण्य कार्य है, परंतु दोनों का फल अलग है. एक तरफ जो नृगा को थोड़ा सा प्रेम प्राप्त हुआ, परंतु जो ब्राह्मण पत्नियां हैं उनको कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, और आगे जाकर उन्होंने रासलीला में भी भाग लिया. Thank you. That's nice. Very nice. Okay. We can end here. I think it's 9:15. Thank you very, very, very much. I hope to see you again soon. Hare Krishna. मैं उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी. हरे कृष्ण. इस ग्रेस पंचरत्न प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय. ताई गौर प्रेमानंदे.
Krishna Krishna Hare Hare